a spin of the coin. Let us see. There you go. The coin has spun. Mukhtar Kadri has won the toss, and what is the decision? They are batting first. MAHARUDRA Rising Stars won the toss and they are batting first is the call from the captain, and Dharasakal Stars will be decorating the field in a short while. Batting first, MAHARUDRA Rising Stars. So that's the news. All the best for both the teams. And Punya Palkar, thank you so much for your proceedings in the toss ceremony. The lineup for Dharasakal Stars goes as follows: Sunny Kanekar, Azan Muhammad, Devdat Chodankar, Mohit Gaonkar, Prasad Harle, Chetan Parab, the captain, Somesh Prabhu Desai, Vishal Gaude, Aditya Ghadi, Saket Ghadi, Shreyash Bhagat, and Sunil Verikar. That's a lineup for Dharasakal Stars. And the lineup for MAHARUDRA Rising Stars goes as follows: the team who won the toss and opted to bat first with the captain Mukhtar Kadri, Basabba Madar, Suprat Gaonkar, Yatin Naik, Ambar Naik, Rajat Haldankar, Omkar Gaude, Urvesh Redkar, Vishal Kamath, Chandresh Gaude, Vishlesh Shirvi, and Prashil Kamath. That's a lineup for
Maharudra Rising Stars under the captainship of Mukhtiar Kadri. So once again wishing both the teams all the very best on behalf of Veling Cricketers presents Royal T20 Championship 2022. Gets it, but doesn't time it. Oh, what a... He gets it, but doesn't time it. Oh, what a... ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Welcome back to official umpires on the ground. Punya Palkar from Savavere and Damodar Naik from Margaon. On the points table, the top team with 4 points is Nagesh Youth of Bandora. Played 3 matches, won 2, lost 1, and net run rate is 1.692. With 4 points, Dharasakal Stars, matches 2, 1-2, no losses, no tie, and with points table 4 with 0.550, that is net run rate. Maharudra Rising Stars at number 3 with 1 match, 1 won and 2 points with a net run rate of 1.824. Kapil Warriors 2 matches, lost 2, going in the minus 0.631 as their net run rate. With Boring Sports Club, matches 2 and lost 2 with minus 3.316. B League, Union Sports Club Marseille, matches 2, won 2 with 4 points at the net run rate of 0.219. Aryan Panthers 77, 1 match, won 1 with points table 2 with 0.654 as their net run rate. McLaren Sports Club 2 matches, won 1, lost 1 with 2 points
with 0.087 as their net run rate. MAHARUDRA charges 3 matches, which 1 won and 2 lost. 2 points with minus 0.103 as their net run rate. Satari cricketers 2 matches, lost 2 with minus 0.487. So that was the points table of Royal T20 Championship of this tournament. The field is set. Are you ready? Will be the call. David Chodankar from the far end into the bowling proceedings, facing him on the striking position, Amber Naik, and on the non-striker's end is Urvesh Redkar. A quick fire from Urvesh Redkar. He's in a sublime form. So once again, a warm welcome to each and everyone. A very good morning to everyone. Once again, a fresh day after a gap of 3 days. Yesterday there were matches, and today David Chodankar will be bowling to Amber Naik. Amber is a very technically good batsman. He's looking good with the bat as well in this tournament. Very calm, cool, and playing for singles and twos is the kind of batting from Amber Naik. Are you ready? And the first delivery of the day. Let's play. Good looking drive in the deep point region. He gets off the mark with the single. Always this is what is style of batting of Amber Naik. And but what a combination this is right from the beginning. One is very aggressive. One is just taking the ball to the aerial routes, and another one is with his basics right. And what Amber Naik is coming and telling him, maybe just trying to give him some advice. Just stay there for 2-3 overs, then you can take your chances. Stopping this unstoppable batsman is not easy, however. And he's been intentionally sent to make the good use of those 6 overs of the power play. Urvesh Redkar. Nicely done, beautifully worked and played in a similar manner, and he gets off the mark with a single as well. So both the batters are off the mark with singles each. Swing and a miss, and there is also one good comment is coming from Varsha Shirodkar from Shiroda. Best of luck for both the teams. She's always a good viewer of Royal T20. Thank you, Varsha madam, for your good comments. Wishing both the teams all the very best. Lovely drive once again from Urvesh Amber Naik this time. A lot of good comments are always motivational force here for everyone to boost their morals. Or slightly outside the off stump time, but maybe within the parameters of playable delivery.
A half volley played straight with the gentle hands. Urvesh Redkar. Just trying to know how the ball is coming to the bat with that gentle single in the mid-off region. That sums up the over number 1. After the completion of 1 over, score is 4 for no loss. Lovely shot. The ball this time will race away to the fence. Beautifully worked and played by Urvesh Redkar. He's now cutting loose. The very first ball of Vishal Gavde is being shown to the fence. Beautifully timed. And pure timing is coming now from once again Urvesh Redkar. He's just trying to cut loose. He's a very good batsman when it comes to the 6 overs of the power play, and a right choice from the captain. And that's the reason why we call Mukhtar Qadri a very smart captain. He knows the combination, how to send the batters. A shot of length pole. This time the ball is up in the air and will be safe. Just gone past the field. The ball was dangerously in the air for quite some time. Didn't quite timed it. It wasn't a shot of length, but still had the guts and courage for Urvesh Redkar to pull that, but didn't quite middled it, but still got away with 2 runs. Swing and miss. A good line from Vishal Gavde. A slightly short of length and a good rise on that occasion. A good comeback, I would say. Slightly way outside the off stump, and a wide signaled from Punya Palkar, who is now bowler's end. 2 officials, very thoroughly professionals, and all are good officials for this tournament, been deployed by umpire Vijay Parulkar. Today is Damodar Naik and Punya Palkar. A shot of length once again, but just a gentle push towards the covers where Somesh Prabhudesai is positioned. Wonderful player, but he's just trying to recover from his injury. A swing and a miss, and once again way outside the off stump. Back-to-back wides, and the back-to-back little exercise here for official umpire Punya Palkar from Savavere. A hat-trick of wides. Like that, once again the arm is been spread like Shah Rukh Khan. Thrice this time.
Vishal Gaud is slightly struggling with the lining. In spite of the word of advice from very experienced, very talented Somesh Prabhu Desai, once again he comes back. To whisper. And the batters will take it. Thank you, they would say. Well bowled on the back foot this time, played gently for a single. And this is good what is to see in both these batters. Every ball trying to just work it out at least minimum for a single. Keeping the momentum going, which is very important to put up a good total after winning the toss by the captain of MAHARUDRA Rising Stars. Mukhtiar Kadri opted to bat first. Maybe at least 170, 180 is what he wants to put and then defend with the team owner, businessman, social worker Tanmay Usgaonkar, and team manager Kiran Pollard, Mohsin Tehsildar. He himself was a good cricketer and now looking for his career in officiating, umpiring. In various tournaments, he's doing wonderful umpiring. And one such tournament was at Powerplay Champions Trophy. Well calculated by Ambar Naik. Technically so good. A dot ball to sum up the over number 2. After the completion of 2 overs, 14 runs for no loss. Devdutt Chodankar once again from the far end started off the third over. Royal T20 Championship Season 6. Altogether 10 teams participating in this wonderful event of sports, that is cricket, which has been most loved. Oh, nicely, then the ball is up in the air and will go past the fielder. Could be a couple of runs or maybe the ball might just race away. Yes, it is. A boundary from Urvesh Redkar. Once again just trying to pull it, but this time he gets it right. And the elevation, excellent on the occasion, and the ball has gone racing away. The very first delivery to fence. And to talk about the women's cricket team of India. So what we have is Simriti Mandana, Shafali Verma, Jamima Rodriguez, Harmanpreet Kaur, Dipti Sharma, Veda Krishnamurthy, Mithali Raj, Julian Goswami, Shikha Pandey, our own Govan, Arunda Reddy, Gaikwad and Punam Yadav, been all bringing the glory to our nation, and all the best for them. Oh, lovely shot. The ball is up and once again will go past the fielder. Beautifully timed shot this time. Straight down the ground, up and over the fielder in the mid off. Another beautiful boundary coming from the bat of Urvesh Redkar. Jimmy Red. Fantastic timing. The ball coming right from the middle of the bat. Sheer timing. And now he's looking quite good. And in this tournament, he's always been a very successful batsman, Urvesh Redkar. He has not disappointed the captain so far.
Been wonderful striking. Lovely, no problem. Once again, the ball will race away. One bounce to the fence. He's going hammer and tongue, and he's going after the bowler, Devdutt Chodankar. Back-to-back boundaries. One set down the ground is long off, another one in the deep long leg region for another beautiful timing. This is called a perfect pull shot, and in this over, he's definitely timing the ball quite nicely, quite sweetly, with the pure timing coming from the bat of Urmesh Redkar. Quickly, with the help of this back-to-back sixes, the score has gone up to 26 runs. Slight pressure there on Devdutt. Watchfully played. He is also sensible batter. Not going every ball bang bang, boom boom, but at times he's also showing a lot of sense. A single to take the score to 27 after the completion of 3 overs, going at the rate of 9 runs per over. Score is 27 without a loss. Vishal Gowde once again on the bowling proceedings in the 4th over. Once again, a very good morning to everyone who has tuned in India, in Goa, entire globe. What a wonderful match this is turning out to be. One of a cracker of a contest. Nicely played on the back foot and played for a single run. In this single, the score will go up to 28 runs gently. Just angling beautifully. This time could be a couple of runs here. Yes, they will get it easily. Intentionally played in that reach in the deep gully. Amber Naik is picking up 2. And definitely the way they have started off the very first opening wicket partnership is just outstanding. Going at the rate of 9 runs every over is a good start initially, especially in the 6 overs of the power play. Oh, this time maybe a minimum of a single. And so far so good this tournament, and all the matches have been so interesting. Yesterday, as we saw, Metafun Charges, the House of Furniture chase 180. It was a wonderful match to watch. Shot of length pull this time. Didn't quite get the timing right, but it's enough. A plentiful of bat on there to take the ball, racing out to the deep long leg region for a boundary from Urmesh Redkar. So every over he's making sure at least 2 boundaries are coming from his bat. Of course, so far so good, but we have not seen a big one. That is the maximum, half a dozen runs. But at least what is good now is the boundaries are serving the team. MAHARUDRA Rising Stars, always been considered as the very tough team in the side. Oh, lovely. Lovely shot above the head of the mid-on fielder. Another boundary, back to back. He is the only batter who's getting those boundaries back to back a couple of times now. In slightly, as you can see, a matter of concern now for Somesh Prabhu Desai.
This kind of runs need to be controlled. But what a good trend that has been set by Urvesh Redkar in the 6 overs of the power play. I've never ever seen in this tournament such a wonderful batter who's giving a maximum of the runs, and he's been doing his job as what has been sent for. Just making things easy. And whenever there is a good partnership right from the open wicket partnership, that will definitely give the batters coming down the order the kind of confidence to play. Good batting, everyone wants to perform to their best of their ability is what the confidence they get. If once a good start has been provided by the openers, and that is exactly what these openers are providing the team MAHARUDRA Rising Stars. It was a good toss to win for Mukhtiar Qadri. Completion of 4 overs, 39 runs. Change in the bowling from the far end. Tall and very talented Somesh has been brought into the bowling proceedings. Maybe you never know, he will provide 1 wicket success for the team. You know what is one disadvantage for them is that they are playing with 9 fielders. That is somewhere it is costing them dearly. Angled it once again. The ball would have raced away. Good fielding from Azan Mohammed. He need to fire today, as a lot of runs has been expected from his bat. He's a class batsman to watch. Shot of length once again. The ball heading straight to Mohammad Azan. That should be just not more than a single. Such a wonderful piece of work there. And even Sunny Kanikar is in a sublime form, giving a good start to the team. Dharasakal Stars. These 2 stars should shine today for Dharasakal Stars. Mohammad Azan and Sunny Kanikar. Well bowled. Look at how good he's trying to just bring that stopover in the run flow. Trying to just make the batters think how to play this kind of deliveries, and a good change in the bowling. Quick one. Straight to Azan Mohammed in the point region. Good looking. Now this time straight to Azan Mohammed, as I anticipated that he could provide 1 wicket, and there it is. Amber Naik playing straight to Azan Mohammed, and Azan Mohammed making no mistake in grabbing that opportunity. So the first wicket has been provided by Somesh Prabhudesai in the change in the bowling that worked wonders, and it always works so in the T20 format of the game. The score is 41 for the loss of 1 wicket. So 6 runs contribution from Amber Naik, but he gave a good start alongside Urvesh Redkar. Yatin Naik joins in at number 3.
Another good batter who has the ability to stay for a long time and play sensible. Exactly like Amber Naik. Both are from Survivor and both have good temperament of batting. Amber Naik and Yatin Naik. And Urvesh Redkar is from Veling. The ball would have missed the leg stump. A good and confident appeal there from Prasad. And he's the change the bowling. The very first ball is appeal for leg B for wicket, but denied. Punya Palkar. But let me tell you one thing, the favorite umpire for Somesh Prabhudesai is, any guesses? It has to be Sanjay Naik. On the back foot, played straight to Somesh in the mid-off region. Wonderful player from Shiroda, Somesh Prabhudesai, and he's lofty shot, could be another wicket here. Yes, it is. He played and played straight back to the mid-off fielder. Over number 5 is a wicket and over number 6 is also a wicket. This time for Prasad. Urvesh Redkar. This time just directed the ball towards the mid-off region and the fielder said thank you for giving me that catch, Urvesh. And Devdutt Chodankar took that catch brilliantly, an Australian style. So wonderful fall of the wickets here now, back to back 2 with a wonderful start from MAHARUDRA Rising Stars. But now once again a partnership will be very handy here for MAHARUDRA Rising Stars. Omkar is just stepping in. Two down batsmen, Omkar at number 4. Omkar Gowde. A lot of young talents as we get to see with the auction and the 10 teams. All the players are going under the hammer. Wonderful achievement from Veling cricketers, especially. Hats off to Pritesh Naik and his team for wonderful once again auction and then 10 teams, team owners with wonderful matches. If you talk about one of the quality tournaments in the leather ball, it has to be Royal T20. Another one is of course Nityanand Sports MLT T20. They've been regarded as the quality T20s of Goa. A shot of length this time, just angling it beautifully. Could be a couple of runs. The ball is racing away there. One fielder is in pursuit of the ball. Good footwork. But by the time he collects the ball and throws 2 runs easy, picking up here for Omkar. Yatin Naik wanted 3. That could have been 3 as well, but running so quickly between the wickets is also exhausting at times because they have to stay and play for a long time as they've been instructed by the captain Kadri. On the back foot, well bowled. Six, also the power play comes to an end and the score is 43-2.
Somesh Prabhudesai is once again on the bowling mark from the far end after the field is spread. Very quick one. What is good in Somesh's bowling is a good variation that he brings every time. Every ball is a different delivery from Somesh. And he's provided the very first wicket, very first breakthrough for the team. Dharasakal Stars. Look at the beautiful bowling action from Somesh. His long upper arm fluid rotation in upper body, which enables him a combination of line and length to keep that in mind and bowl. A little bit of spin, sometimes a very quick delivery from Soumya. Slightly in the leg side and beautifully worked and glanced it for a couple of runs. Oh well, that's gone for a boundary. There wasn't a deep fine leg region. Field has been put by Soumya. Annoyed by himself. Because every run that he wants to save, he knows how important these runs could be for the opponents. Look at Somesh Prabhudesai is tying the laces of the batter. Thank you, he says, Omkar. That is the beauty of cricket. Oh, the ball up and in the gap. Could be another boundary here, and yes, it is. It's 50 up for MAHARUDRA Rising Stars with this boundary. In fact, 53. A gentle single from Yatin. Once again trying to reconstruct, rebuild, recover from the damage done of 2 wickets by one by Soumya, another one by Prasad in the 5th and 6th over. Look at the wall of fielders in the offside. A very quick one, beautifully bowled. There's a fielder in the gully, there's a fielder in the point. Deep super cover, extra cover, and a long off. Completion of 7 overs. 54 for 2. सात ओवरों की समाप्ति, 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में संभल कर बिल्कुल खेलने की कोशिश। यतीन नाइक को अब बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है कि जमकर बल्लेबाजी करें। और यतीन नाइक की अगर बात करें तो एक ऐसा बल्लेबाज जो लंबी पारी खेल सकता है। हल्के से दिशा दी, 1 रन के लिए दौड़ पड़े ओमकार गावड़े जो कि 4थे नंबर पर, यानी कि उर्वेश रेडकर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं मैदान में। और अक्सर महारुद्रा राइजिंग स्टार्स की टीम को एक बढ़िया टीम मानी जाती है क्योंकि पिछले वर्ष के चैंपियन रहे हैं महारुद्रा राइजिंग स्टार्स। हाफ वॉली बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद करने की कोशिश और हल्के हाथों से खेल, 2 रन आसानी के साथ बटोरते हुए ओमकार गावड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 57 रन।
पर पंच, मगर सीधे खिलाड़ी की ओर, यानी कि सौम्या प्रभुदेसाई जो कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े हैं। कोई रन का इजाफा नहीं। एकमात्र बेहतरीन क्रिकेटर, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग उनकी पहचान। सौम्या प्रभुदेसाई, गति परिवर्तन बिल्कुल सुंदर, बढ़िया गति परिवर्तन के साथ पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को, समझ नहीं पाए। बैकफुट पर हालांकि खेलने की कोशिश ओमकार गावड़े द्वारा, मगर पूरी तरह से बीट होके रह गए। बिल्कुल जिस प्रकार से जो लेंथ रखी गई थी, पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार से खेले, आगे को या फिर बैकफुट पर। इस बार बैकफुट पर बिल्कुल ड्राइव सुंदर, मगर कवच की दिशा में खिलाड़ी तैनात। एक रन जरूर मिलेगा। तो फिर से एक बार जमने का प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा इक्का दुक्का रन के साथ पारी को सजाने संवारने की कोशिश यतीन और ओमकार गावड़े द्वारा। ओवर की समाप्ति होती हुई 8, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अट्ठावन रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवरों की समाप्ति के बाद रॉयल T20 का ये बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं नदीम अहमद को। मेरे साथ जल्द ही जुड़ेंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल एक जाने माने कमेंटेटर चंदन सिंह साहब, उनका स्वागत। अजान मोहम्मद को लाया गया है दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत करेंगे 9वीं ओवर की। स्कोर हुआ है 58, 2 विकेट के नुकसान पर, और हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अजान मोहम्मद पूरी तरह से तैयार। एकमात्र बेहतरीन क्रिकेटर, और अगर टैलेंट, हुनर को देखना है तो बिल्कुल अजान मोहम्मद की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग आप देख सकते हैं। एक उभरता हुआ सितारा। गेंद हवा में, कैच का मौका, और पहली गेंद पर एक सफलता मिलती हुई अजान मोहम्मद को। बिल्कुल पूरी तरह से मिस टाइमिंग कर बैठे ओमकार गावड़े और खामियाजा भुगता 1 विकेट के साथ, और 58 पर तीसरा विकेट गिरता हुआ। हालांकि 1-2 गेंदें खेल लेते और समझ लेते कि किस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है अजान की ओर से। स्वयं कप्तान उतरे हैं मैदान पर मुख्तियार कादरी। बिल्कुल एक जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ओपन विकेट पार्टनरशिप रही थी अंबर नाइक और उर्वेश रेडकर के बीच, उसके बाद बिल्कुल एक साझेदारी बनाने की कोशिश हालांकि बिल्कुल रही यतीन नाइक और उर्वेश रेडकर के द्वारा। उर्वेश आउट होकर चले आए, मगर उसके बाद ओमकार गावड़े ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। केवल 6 रनों का योगदान दिया ओमकार गावड़े ने, और वापस पवेलियन एक सिंपल कैच दे सौम्या को कवच की दिशा में पहली गेंद पर आउट होकर वापस लौटे। तो देखना होगा कि मुख्तियार कादरी पर बिल्कुल इस मैच का दारोमदार उनके कंधों पर कप्तान है। जितनी देर टिकेंगे उतने रन बनेंगे, और बिल्कुल मुख्तियार की खासियत यह है कि जब जम जाएं तो बिल्कुल अर्धशतक या सेंचुरी ज़रूर लगा लेते हैं, मगर टिकना ज़रूरी। बोल्ड कर दिया इस बार, बिल्कुल समझ नहीं पाए, पूरी तरह से चकमका कर रह गए। और अजान मोहम्मद बिल्कुल अब हैट्रिक पर, बिल्कुल ब्लॉक होल में की गई गेंद काफ़ी तेज़ गति से, हालांकि संभल कर खेलने का प्रयास, पूरी तरह से लाइन से मिस कर गए मुख्तियार कादरी, और बिना खाता खोले पहली गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। अब हल्का सा बिल्कुल दबाव रहेगा बल्लेबाजों पर। कुल मिलाकर 4 विकेटें गिरी हैं, और केवल यतीन नाइक जो कि क्रीज पर डटे हैं। एक बिल्कुल बड़ा झटका लगता हुआ मुख्तियार कादरी के रूप में महारुद्रा राइजिंग स्टार्स को। और क्या ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक रहेगी? और अजान मोहम्मद बिल्कुल हैट्रिक की कगार पर।
रजत हल्डनकर या फिर प्यार से उन्हें कहते हैं एडी। एक साझेदारी की तलाश बल्लेबाजों को। महारुद्रा राइजिंग स्टार्स हल्के से अब बिल्कुल मुश्किलों में आती हुई। और पिछले 6 वर्षों से वेलिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित रॉयल T20 का बिल्कुल बेहतरीन टूर्नामेंट, ये सीज़न 6 और हर मैच के साथ टीम 2-2 पॉइंट जीते हुए। तो फिलहाल नागेशी तो बांदुरा 4 पॉइंट्स, धारसकाल स्टार्स 4 पॉइंट्स के साथ लीड लेते हुए पहले ग्रुप में। बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी, 3 गेंदों में 2 विकेटें। पहली गेंद पर आउट होने वाले ओमकार गावड़े, दूसरी गेंद पर मुख्तियार कादरी। अब बाएं हाथ के एडी स्ट्राइक पर। बैकफुट पर संभल कर और बिल्कुल रनों की यात्रा का दायित्व इन दोनों ही बल्लेबाजों पर रहेगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है इन दोनों के बीच। और आप देख सकते हैं आसमान पर हल्के से बादल छितराए हुए रुई के गोलों की तरह। गेंद हवा में इस बार, मगर संभल कर बिल्कुल गैप में खेला हुआ ये शॉट 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए रजत हल्डनकर स्कोर को पहुंचाया 60 रनों पर। ये 9वीं ओवर जो कि जारी, और स्कोर इन दोनों के साथ 60 पर पहुंचता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए महारुद्रा राइजिंग स्टार्स की टीम। ओ इस बार बिल्कुल पकड़ लिया था कैच, भाग्यशाली रहे एडी। तो लगभग 3 विकेट ले सकते थे अजान मोहम्मद, मगर बढ़िया ओवर घटाया, केवल 3 रन दिए हैं इस ओवर में और 2 विकेटों की सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर 61, 4 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी चंदन सिंह की जुबानी। नौ ओवर समाप्त और स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो कि अंग्रेजी में आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे। इसी बीच पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे सोमेश, सामने बल्लेबाज तैयार। और हल्के हाथों से खेला, पुश किया, कोई रन नहीं। तो बहुत ही सुंदर मौसम और उसी मौसम में ये मुकाबला खेला जाता हुआ। काफ़ी दूर दूर से समर्थक और दर्शक आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के हाथों से खेला, गली के क्षेत्र से फील्डर आए और इसी बीच मौका 1 और रन यहाँ पे लेने का। तो 10वां ओवर लेके आए हैं सुमेश। अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, गली पॉइंट और अपील जरूर, लेकिन उस अपील का कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर और उस अपील में उत्साह जरूर था। इसी बीच एक बार फिर से सामने बल्लेबाज के लिए और गली के क्षेत्र में खेला है। 1 रन यहां पे और बल्लेबाज के खाते में, टीम के खाते में जुड़ता हुआ। तो बहुत ही लाजवाब सुंदर
गेंदबाजी यहाँ पे धारसकाल के गेंदबाजों द्वारा बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। और इसी बीच सामने बल्लेबाज के लिए और बिल्कुल बॉलर के बगल से गेंद को खेला और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर हैं और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए एक और रन लिया। और अब की बार फुल टॉस बना के दिलेश कुक हालांकि शॉट खेलना चाहते थे और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। और इसी बीच दो महत्वपूर्ण दो और यहाँ पे रन जुड़ता हुआ। बहुत ही सुंदर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और इसी के साथ ओवर समाप्त, 10 ओवर समाप्त, स्कोर 66 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। दस ओवर समाप्त और 11वां ओवर लेके आए हैं गेंदबाज, जो कि दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे सामने। और बहुत ही बढ़िया, हालांकि धीरे से गेंद को टहला दिया था और गेंद गई थी डायरेक्ट फील्डर सोमेश के हाथों में। इसी बीच थोड़ा सा थ्रो ऊपर से, तो यहाँ पे 2 रन और टीम के खाते में, बल्ले के खाते में जुड़ता हुआ। गेंदबाज चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और गेंद को खेला। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। और गेंदबाज अजान, इन्होंने शानदार इस मुकाबले में, हालांकि पहला मेड ऑन ओवर इन्होंने फेंका था, उसके बाद एक और फेंका गया। चले और बल्लेबाज ने धीरे से पुश किया, कोई रन नहीं। गेंदबाज फिर से चले सामने बल्लेबाज के लिए। अब की बार लपेट के मारना चाहते थे, पैडल स्वीप, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बहुत ही सुंदर मौसम और इसी मौसम में एक बढ़िया मुकाबला। गेंदबाज चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। गेंद को खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर लंबी दौड़ लगा के गेंद को जब तक थ्रो करते, इसी बीच 2 महत्वपूर्ण रन मिलता हुआ। तो लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन से फील्डर दौड़ लगाते हुए, और इसी बीच गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए और पैर पे गेंद थी और गेंद को खेल दिया। गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन चौका, गेंद पैरों पे थी, लेग और मिडिल स्टंप पर, और गेंद को दिशा दे दिया। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 11 ओवर समाप्त, 75 रन 4
विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर समाप्त, 75 पे 4। और अब सामने फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे सोमेश और बल्लेबाज तैयार। और सामने बल्लेबाज के लिए और उतना ही सुंदर स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के खड़े फील्डर के पास और एक इसी बीच एक और रन यहां पे बल्लेबाज के खाते में जुड़ता हुआ, टीम के खाते में जुड़ता हुआ। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद और अब सामने यतीन और बिल्कुल ऑफ स्टंप अंडरलाइन। और हालांकि बल्लेबाज ऑफ साइड भी खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से भी बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और एक बार फिर से बिल्कुल उसी गेंद की पुनरावृत्ति, तो बहुत ही बढ़िया लाइन सोमेश के द्वारा। बिल्कुल जादुई गेंदबाजी यहां पे सोमेश के द्वारा इसी बीच। और अब की बार हाथ खोलने का मौका, हालांकि गेंद फील्डर की थोड़ी सी आगे गिरी और फील्डर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। अगर प्रयास करते तो मौका बन सकता था। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपनी छोर को बदला और दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज में, तो थोड़ी सी फील्डिंग में दिक्कत। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद गई कवर के बगल से बाउंड्री लाइन की तरफ। हालांकि फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। तो बढ़िया मुकाबला और उतना ही सुंदर आउटफील्ड और फील्ड, हरी हरी घास। पवेलियन एंड से गेंदबाज चले और फिर से खड़का दिया, गेंद जा रही है बिल्कुल कवर पॉइंट के बगल से डिप बाउंड्री लाइन कवर। इसी बीच जब तक वहां से थ्रो आता, एक और रन और ओवर समाप्त। 12 ओवर समाप्त, 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी अजान के ऊपर और बहुत ही बढ़िया अभी तक अपने काम को अंजाम देते हुए गेंदबाज अजान। और सामने बल्लेबाज तैयार, जगह बनाया और गेंद को खेला कवर पॉइंट, गेंद गई बाउंड्री लाइन के और वहां पे खड़े फील्डर रन।
एक बार फिर से सामने बल्लेबाज के लिए, और गेंद हवा में सीधे खड़े फील्डर सोमेश के हाथों में। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे कैच सोमेश के द्वारा, और 5वां झटका लगता हुआ महारुद्रा राइजिंग स्टार को। तो 5वां झटका लग चुका है और 80 रन के स्कोर पे यहाँ पे 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर महारुद्रा राइजिंग स्टार। हेलो हेलो। तो पूरी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजों का जो दबदबा है वो कायम। अजान जिन्होंने शानदार गेंदबाजी, नए बल्लेबाज सुप्रत और सामने अजान, और गेंद को खेला, गेंद हवा में है, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना है कैच कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए फील्डर आए और निगाहें गेंद पर बना के रखा। तो एक और यहाँ पे झटका, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ महारुद्रा राइजिंग स्टार को लगने वाला 6ठा झटका। नए बल्लेबाज गए हैं विशाल। तो बहुत ही गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल सूर्य से ही बांध के रखा है यहाँ पे। और कल का भी मुकाबला कुछ ऐसे ही देखने को मिला था सेकेंड मीटिंग का। इसी बीच अजान चले सामने बल्लेबाज के लिए और बहुत धीरे से खेला, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना है 1 और या 2। और इसी बीच बहुत ही तेजी के साथ दूसरा रन भी यहाँ पे पूरा करते हुए बल्लेबाज। तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का नज़ारा अभी तक गेंदबाजों के द्वारा, हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल बांध के रखा है गेंदबाज अजान ने। और सामने बल्लेबाज विशाल तैयार। इसी बीच फिर से गेंद को दिशा दिया, गेंद हालांकि रन लेना चाहते थे, आखिरी समय में इरादे को बदला और ओवर की समाप्ति। 13 ओवर समाप्त, 82 6 विकेट।
तो एक बार फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज और सामने बल्लेबाज तैयार। जगह बनाया और गेंद को खेला कवर पॉइंट, जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास में फील्डर मौजूद हैं, वाइड बाउंड्री लाइन के करीब। इसी के साथ मौका था यहाँ पे 1 रन लेने का। प्रसाद और फिर से जगह बनाया और वहां पे बहुत ही सुंदर क्षेत्र रक्षण यतीन द्वारा, बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र पे खड़े थे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो शॉट के साथ ही दौड़ पड़े थे। यहां पे थोड़ी दबाव में नजर आती हुई महारुद्रा राइजिंग स्टार। इसी बीच गेंद जगह बनाया और गेंद को खेला ऑन साइड में। गेंद गई बाउंड्री लाइन, जो कि इसी बीच 1 रन लेने का मौका। वाइड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई थी और अब की बार जगह बनाया और गेंद को उठा के मारा है। गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही लंबा स्ट्रोक, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद ये स्ट्रोक, देर आए दुरुस्त आए, और जैसे ही मौका मिला और उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज पवेलियन एंड से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और लेग स्टंप के बगल से खेला है और बाई के रूप में पैर से लगकर गेंद गई थी और खुद विकेट कीपर ने गेंद को उठाया था। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो पिछले बहुत ही सुंदर छक्का यहां पे लगाया गया था बल्लेबाज विशाल, और धीरे से खेला। हालांकि ये जा रही है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन और जुड़ता हुआ। तो जैसे ही बल्लेबाज विशाल को हाथ खोलने का मौका मिला था और उन्होंने डंका बजा दिया था, गेंद निकल गई थी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्त, 14 ओवर समाप्त, स्कोर 93 रन 6 विकेट खोने के बाद। तो 14 ओवर समाप्त। एक बार फिर से दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अजान, और धीरे से पुश किया और चतुराई के साथ शॉट के वो खेलते ही बल्लेबाज ने दौड़ लगाई और आसानी से 1 रन यहां पे और जुड़ता हुआ। अजान जिन्होंने गजब का प्रदर्शन किया और फिर से धीरे से खेला और खुद पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं और इसी बीच 1 और रन। तो अजान ने अपने गेंदबाजी से बहुत ही प्रभाव छोड़ा है। ओवर की अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज के लिए और जगह बना के लपेट दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर भी, क्योंकि एकदम सोच रहे थे कि आराम से गेंद को पकड़ेंगे फिर उसके बाद थ्रो करेंगे, और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं। और इसी बीच गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए और फिर से खेला। गेंद मिड ऑन के क्षेत्र से होती हुई जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ।
फील्डर मौजूद हैं और इसी एक रन के साथ 100 रन महारुद्रा राइजिंग स्टार का यहां पे 100 रन पूरा होता हुआ 6 विकेट खोने के बाद। गेंदबाज फिर से अपने ओवर की अगली गेंद और बढ़िया शॉट खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर वहां पे मौजूद है, छिटकी 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 और आखिरकार गेंद को पकड़ लिया और एक और झटका लगता हुआ तो महारुद्रा राइजिंग स्टार को लगने वाला 7वां झटका, विशाल आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो एक और यहां पे झटका लगता हुआ महारुद्रा राइजिंग स्टार को, तो जो महारुद्रा धीरे धीरे रही सही उम्मीदें भी अब थोड़ी धूमिल होती हुई और 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 15वां ओवर चल रहा है। तो देख अभी इसके बाद 5 ओवर और आने शेष, तो देखना है कहां तक कितना बड़ा स्कोर देते हैं इसी बीच। और अब की बार सोच समझ के साथ खेला गया स्ट्रोक स्लिप के बगल से, हालांकि फील्डर वहां पे गली के क्षेत्र में मौजूद थे और अपने शरीर से रोकना चाहते थे, उनको रोक नहीं पाए, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया समझबूझ के साथ, हालांकि 1 रन के लिए खेला था लेकिन वहां खड़े फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए और दे के निकल गई 4 रन, तो 4 महत्वपूर्ण रन। इसी के साथ ओवर समाप्त, 15 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 104 रन 6 विकेट खोने के बाद। 7 विकेट खोने के बाद पंद्रह ओवर समाप्त, 104 7 के नुकसान पर पावेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे प्रसाद और इसी बीच हाथ खोलने का मौका और गेंद गई सीमा रेखा, हालांकि ऑफ साइड में ऑन साइड में सीमा रेखा के पास जो खड़े फील्डर थे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे पूरा किया। तो देखना है कितना बड़ा स्कोर देते हैं धरसकाल के लिए और बल्लेबाज तैयार और बहुत ही बढ़िया, हालांकि इरादा कुछ और, आखिरी समय में दिलेश कुक की तरह खेला, गेंद गई बाउंड्री लाइन, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के करीब में और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन यहां पे पूरा किया और विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, दिलेश कुक लगाने का प्रयास और हद तक प्रयास सही। तो देखना है कितना बड़ा टोटल देंगे धरसकाल को। इसी बीच
बढ़िया गेंद, और गेंद जाके पैर पे लगी और लुढ़कती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ। तो शुरुआती झटके जरूर लगे। इसी बीच फिर से जगह बना के खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शॉट के लिए जगह बनाए और गेंद को खेला, गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही उपयोगी चौका महारुद्रा राइजिंग स्टार के लिए, बहुत ही उपयोगी चौका जो रनों का सूखा पड़ गया था, उस सूखे को थोड़ी सी भरपाई करते हुए। और फिर से उसी शॉट की पुनरावृत्ति और उसी क्षेत्र में गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत चौका बल्लेबाज के द्वारा और देके जाएगी 4 उपयोगी रन। तो बहुत ही सुंदर यहां पे 2 चौके बल्लेबाज के द्वारा लगते हुए, और बल्लेबाज हैं बसु। और जहां ताकत काम ना करे वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत, और वही काम करते हुए बल्लेबाज इसी बीच। और अब की बार बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बल्लेबाज खेल नहीं पाए ओवर की, और ओवर समाप्त 16 ओवर समाप्त, स्कोर 115 रन 7 विकेट खोने के बाद महारुद्रा राइजिंग स्टार। और आगे का आंखों देखा हाल आपको अंग्रेजी में सुनाएंगे नदी मोहम्मद जी। इसी बीच दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे। देवदत्त सामने बल्लेबाज के लिए, और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो पहली गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अब देखना होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कितना बड़ा स्कोर दे पाते हैं धरसकाल के लिए 17वां ओवर चलता हुआ। तो इन बाकी की गेंदों में, और फिर से दिलेश कुक, और घूंघट के आड़ में बिल्कुल गेंद को खेला, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो जगह बनाया शॉट के लिए और गेंद को खेल दिया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही टाइम पे ये चौका आता हुआ महारुद्रा राइजिंग स्टार के लिए, और गेंदबाज देवदत्त चले। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और खामोश रह के भी बीच बीच में अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ सामने गेंदबाज चले, और क्रीज के आगे आए, जगह बनाया और खेल दिया। गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन
के खड़े जो कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से सटे हुए। जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ दौड़ते हुए 2 रन यहां पे और टीम के खाते में जोड़ते हुए, अपने खाते में जोड़ते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। और जगह बना के खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट छक्का, भरपूर ताकत का उपयोग किया और गेंद को खेल दिया। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और उसी अंडे की ताकत का कमाल। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल जियो दंदनादन, जैसे ही बल्लेबाज को मौका मिला अपने बाजुओं को खोलने का, और बिना देर किए राम की चिड़िया राम का खेत भर लो चिड़िया, इसी बीच खा लो चिड़िया भर भर पेट। फिर बल्लेबाज आगे आए, क्रीज से निकले और जगह बना के खेलना चाहते थे, लेकिन चौकन्ने और चतुर गेंदबाज पहले ही बल्लेबाज के इरादे को समझ लिया था वहां पे गेंदबाज देवदत्त ने, और गेंद की लाइन को कम किया और गेंद चकमा देती हुई निकल गई। बल्लेबाज को अंगूठा दिखाती हुई निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। इसी बीच देवदत्त और बहुत ही बढ़िया गेंद को ढकेला है, गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में और 1 रन और टीम के खाते में। तो ओवर समाप्त, 17 ओवर समाप्त, 128 7 विकेट के नुकसान पर। तो 17 ओवर समाप्त, यहां से 18 गेंदें आनी शेष। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूं मुझे हिसाब तो दे, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। तो 17 ओवर समाप्त, 18वां ओवर जो कि पवेलियन एंड से गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए, और बल्लेबाज ने मोर्चा खोल दिया है वहां पे और गेंद को खेला ऑफ साइड में। हालांकि शोबेस फील्डर मौजूद हैं उनके सर के ऊपर से, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। तो दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरा किया। तो बल्लेबाज अब बिल्कुल मोर्चा खोल दिए हैं, डू आर डाई, करो या मरो, और निश्चित रूप से इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत। गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए, फिर से खेला गेंद जा रही है। हालांकि ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर मौजूद हैं, 1 ही रन। तो प्रयास जरूर, वादे तो टूट जाते हैं लेकिन प्रयास करने से प्रयास कामयाब भी होता है। और 131 रन। इसी बीच गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए, और फिर से हालांकि बढ़िया शॉट, गेंद आ रही है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पास। 1 और यहां पे रन जुड़ता हुआ। विशाल चले पवेलियन एंड से, और सामने बल्लेबाज तैयार, और फिर से फुल टॉस और उतना ही मेंटोस, करारा शॉट, लेकिन 1 ही रन मिलेगा सीधे खड़े फील्डर के
पास गई गेंद और फील्डर थे अजान, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी, 100 में 95% किफायती गेंदबाजी अजान के द्वारा। इसी बीच गेंदबाज चले, फिर से गेंद को बिल्कुल बल्ले के निचली सतह पे लगी और दिशा दे दिया। गेंद गई स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के पास खड़े फील्डर के यहां। इसी बीच एक और रन यहां पे पूरा होता हुआ। तो देखना है कितना रन यहां पे महारुद्रा स्टार्स के बल्लेबाज कितना बड़ा स्कोर देंगे, विशाल स्कोर। इसी बीच विशाल चले और अब की बार बहुत ही तेजी के शॉट खेला गया स्ट्रोक और उतना ही सुंदर फील्डिंग अजान के द्वारा। और इसी के साथ 2 रन यहां पे और बल्लेबाज और इसी के साथ बल्लेबाज यतीन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हमारे स्कोरर ने हमें थोड़ा लेट में अवगत कराया, उसके लिए माफी चाहेंगे। और शानदार 52 रन और ओवर समाप्त, 18 ओवर समाप्त, स्कोर 136 रन। 7 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद महारुद्रा राइजिंग स्टार 136 विकेट खोने के बाद महारुद्रा राइजिंग स्टार दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे देवदत्त, सामने बल्लेबाज तैयार। और फिर से गेंद के रफ्तार को समझा और आड़े बल्ले से खेला। इसी बीच एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यतीन के द्वारा, बिल्कुल संकट मोचन। जब विकेट गिर रहे थे तो उस समय बिल्कुल धैर्य के साथ बल्लेबाजी किया और अर्धशतक लगा के खेल रहे हैं बल्लेबाज। सामने तैयार और फिर से, हालांकि अब की बार आप स्टंप के बाहर और वाइड गेंद, तो एक और रन यहां पे मिलता हुआ। तो बहुत ही समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी यतीन के द्वारा। जब विकेट गिर रहे थे तब मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए और जगह बना के फिर से वही दिलेश कुक और गेंद निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत बल्लेबाजी यहां पे बल्लेबाज के द्वारा, यतीन के द्वारा। और गेंद अब बिल्कुल फुटबॉल, वॉलीबॉल बड़ी बड़ी नजर आती हुई। गेंद को पहले ही पढ़ ले रहे हैं बल्लेबाज। और जब आप समय देते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुचनाम, रसरी आवत जात के पत्थर पर परत निशान, तो अनुभव बहुत ही बड़ा काम आता। और इसी बीच खड़का दिया, किसी को कोई मौका नहीं और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। तो बहुत ही उपयोगी छक्का बल्लेबाज यतीन के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही सुंदर छक्का। और स्कोर जा पहुंचा 148 रन। बहुत ही सही समय पर। आपको याद होगा जब भारतीय टीम थोड़ी सी दिक्कत में आती थी तो राहुल द्रविड़, और फिर से हालांकि गेंद हवा में है और खुद विकेट कीपर गेंद को पकड़ेंगे, एक और रन। तो जब भारतीय टीम के बल्लेबाज राहुल द्रविड़ संकट मोचन, जो कि अपनी टीम के लिए माने जाते थे, बिल्कुल आज वही कार्य करते हुए यतीन संकट मोचन
महारुद्रा राइजिंग स्टार के लिए। जब विकेट गिर रहे थे तो उस समय जाकर के बिल्कुल समझबूझ के साथ बल्लेबाजी किया और अभी तक डटे हुए। इसी बीच और अब की बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो शुरुआती में जिस तरह के झटके लगे उसके बाद बिल्कुल संभल के बल्लेबाजी किया यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने और बढ़िया मुकाबला यहां पे देखने को मिलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से और गेंद को टहला दिया और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गली के क्षेत्र से और ओवर समाप्त। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 153 रन। 19 ओवर समाप्त, स्कोर 153 रन। 7 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद महारुद्रा राइजिंग स्टार अब आखिरी की 6 गेंदें आनी शेष। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। तो 6 गेंदें आनी शेष और देखना है इन 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितना रन और जोड़ पाएंगे दोनों बल्लेबाज। अभी स्कोर 153 रन 7 विकेट खोने के बाद। 6 गेंदें आनी शेष और सामने बल्लेबाज तैयार। पवेलियन से पहली गेंद फुल टॉस और गेंद को खेल दिया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो दंदनादन बिल्कुल गोलियों के रफ्तार से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बल्लेबाज ने यहां पे अपना आक्रामक तेवर दिखा दिया है गेंदबाज को और देखना है क्या इसी आक्रामक तेवर से बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल पवेलियन एंड से चले और फिर से जगह बना के हालांकि खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज भी चतुर, गेंद की रफ्तार को कम किया और पूरे तरीके से बल्लेबाज को चारों खाने चित्त किया गेंदबाज ने। तो चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज गेंद को देखते ही रह गए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। देखना है क्या 175 के करीब। इसी बीच बल्लेबाज ने फिर से खेला, गेंद गई ऑफ साइड, बिल्कुल लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के करीब, फील्डर मौजूद और इसी बीच मौका था छोर बदलने का। अब सामने है बल्लेबाज बसु यतीन जिन्होंने आज काबिले तारीफ बल्लेबाजी किया है महारुद्रा राइजिंग स्टार के लिए। और जगह बना के खेला, गेंद हवा में है, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं पॉइंट के क्षेत्र से और एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। तो देखना है क्या 175-80 के करीब जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी दोनों बल्लेबाज अपना जौहर बिखेरते हुए। इसी बीच और जगह बनाया और खेला, गेंद हवा में है, विकेट कीपर के सर के ऊपर से। थर्ड मैन जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते निश्चित रूप से यहां पे रन आउट जरूर। तो एक और झटका, दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और एक रन यहां पे मिलेगा। तो 160 रन
8 विकेट के नुकसान पर। तो एक लंबी पारी खेल के वापस पवेलियन आए बल्लेबाज यतीन। इसी बीच सामने बल्लेबाज चंद रेस के लिए और जगह बना के खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो ओवर की समाप्ति 20 ओवर समाप्त, 160 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले को जीतने के लिए धरसकाल स्टार्स को निर्धारित 120 गेंदों में 161 रनों की जरूरत।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Welcome back. Mukhtar Qadri on the bowling proceedings. 161 is the target at the rate of 8 runs an over to get to the target of 161 in 20 overs. Azan Muhammad on strike and Sunny Kanekar on non-strikers end. Slightly outside, wide signaled. Wide signaled.
Once again, just struggling with the lining. Mukhtar Qadri maybe trying to just bowl a different delivery. Wide again, back-to-back wides from Captain Qadri. What an outstanding inning played by Yatin Naik. Contributed 68 runs in just 42 deliveries. Was an outstanding batting from him. The one man who stood tall and played such a wonderful inning of 68 runs in 42 deliveries. And Urvesh Redkar, the second highest, contributed 32 runs in 22 deliveries. The second highest in 22 runs from Basu Madar. So these three batters who contributed for MAHARUDRA Rising Stars to put up a total of 160. I always emphasize on a good start from the batters, especially on the open wicket partnership. If the partnership can survive for at least 4 to 5 overs, it will be good. Lovely drive, gone past the fielder. In the covers, and it will race away to the fence. Beautifully timed shot, little bit of extra bat on that. Wonderful timing from Azan Muhammad, cracking beauty. Puts away in a style in between two fielders. Extra cover and mid off the ball. Race away in between these two fielders. Oh, this time once again a swing of the bat, just getting carried away. Azan Muhammad. He's technically good, got some good stance, good style of batting. Picking up the strokes, the line in length very quickly, gets in a good position. At the same time, what matters is a temperament. On the back foot, once again, beautifully placed for a single. Left hand, right hand combination right from the beginning is a good combination for Dharasakal Stars. Once again, as you can see, the clouds are hovering on the sky. In Chennai yesterday evening. Maybe it is the knocking of the monsoon. This is the month of May. And definitely giving some relief from this scorching heat, blazing sun out there. Captain Qadri. On the back foot, and this dot ball will sum up the over number 1. After the completion of 1 over, score is 8 runs.
And he loves this kind of shot. And once there was a good connection in the previous match, exactly the same manner. I think in an over he always tries this kind of a shot. Once get connected, the ball will race away about the head of the shot. Fine leg fielder. Azan Mohammed on strike. Amber Naik from the far end. Lovely timing. No need to run as the ball will do the needful for the moment. And what a beautiful shot selection, and the connection was so brilliant. Pure timing from Azan Mohammed, and the ball has gone in the deep mid-wicket region. Effortless. Just sheer timing in the power play overs, which is very effective. And this batsman is definitely going to create some problem for the bowlers and team MAHARUDRA Rising Stars. Azan Mohammed, as he has shown his skill at Nityanand Sports, who was playing for Bogda Cricketers Vasco, and they were the champions of Nityanand Sports T20. And Azan Mohammed played the crucial part. Once again, take that. The ball will once again race away. It was just a bit of gloves on that, the ball gone fine. So back-to-back boundaries coming up from the bat of Azan Mohammed. Leg by signalled. As per the umpire's sighting, it was a leg by. Correction. I thought the gloves on the bat, on the ball, but it was from the thigh pad maybe. Good pull once again. There is a fielder in the back. Will he get to the ball? No, the ball will once again race away. A hat-trick of boundaries, and Amber Naik is getting very, very expensive. Mukhtar Qadri will give a thought whether to continue this ball in the next over as well. In the meantime, taking charge once again, very talented cricketer Azan Mohammed. What a quick fire from him in this second over. Back-to-back, a hat-trick of boundaries. Two in the deep mid-wicket, another one in the deep fine leg. Outside edge, and the ball heading straight to the point fielder. Protection there. But in this over, he has done the damage, Azan Mohammed. Eight runs and an over. They have to score, and consistently they have to score every over, which will take them to 160 runs in end of 20 overs. Nicely done. Once again, very quick. Just past the ball. Maybe a meter or half a meter very quickly from the fielder who has been deployed in the short fine leg region. Boundary number 4 sums up the over number 2. After the completion of 2 overs, 25 runs, blistering.
Lofted one, 6 runs. Wonderful time shot, and this time from Sunny Kanekar, the right-handed batsman, takes the ball on the half volley and played straight back out of the park for 6 runs. Basavaraj Madar, the very first delivery has been shown to 6 runs. That really shows the confidence level of the batters of Dharasakal Stars. On the back foot, just angled it. Yes, is a call from Azan Muhammad. A single will be very comfortable. Oh, but a good start from Dharasakal Stars here to chase the target of 160, 161. Is the run chase target to achieve and win. As Dharasakal Stars are definitely made already 4 points and are among the top teams on the table. If they win this match, could be 6 points. But there is a big if in the midfield. They have to go a long way. No doubt it's a good and a fantastic start there from Dharasakal Stars, from both these left hand, right hand combination batters. Ishan Sharma, style bowler. From the other side, Basu Madar, the Ravichandra Ashwin. He knows the trick of the book, and he knows exactly how to get those dot balls in the tense situation. He's a very experienced bowler. On the back foot, he played straight back to the ball. Good footwork here from the fielder, Subrat Gaonkar. And Subrat Gaonkar could not perform today. A lot of batsmen did perform off MAHARUDRA Rising Stars. To name the captain Kadri, Subrat, and Omkar Gowde. At least a contribution of 25 to 30 runs from each of these batters could have taken the score more up, almost 180 plus for sure. On the back foot, well bowled. Just trying to work it out and gets a single here, Sunny Kanekar, with that single that sums up the over number 3 after the completion of 3 overs. Going at the rate of 11, it's 34 for the loss of no wicket. So who are going to be the bowlers? Once again been brought from Mukhtiar Kadri, as he is definitely bringing changes drastically. First he started off, then he replaced himself with Basavaraj Madar, and from far it was Amber Naik, and he's been replaced by Subrat Gaonkar. A lovely pull shot once again, beautifully executed, magnificent shot from Sunny Kanekar. The very first ball, bang she goes.
all the way to the fence. These two batters are enjoying their batting so well. Suprat Gaonkar, the very first delivery change of bowling from the other end in place of Amber Naik. But the batters continue to get the runs in the similar momentum. Doesn't matter who's the bowler or what changes the captain brings in, but they like to bat their natural left hand, right hand combination from these two batters. Just a nudge, angling it beautifully in the short third man region, and gets a single. Once again, the similar way of just scooping it from Ishan Azan Mohammed. Wide signal, slightly the ball deviated in the leg side. And Azan just letting the ball go bypass him, and with a little bit of a scoop kind of a shot, which he plays with such a beautiful timing. Good looking shot in the deep point region. And there'll be a single. Slight fumble there, but he quickly regains the control on the ball and restricted the batters on just one run, and now just trying to maybe speed up. Always it is very important for the batters to spend some time in the crease, and these two have spent some time on the crease, so they are looking definitely full of confidence and seeing the ball like a football. With ease they are playing their strokes and getting those boundaries consistently. Every over, wonderful fielding from the captain. This time once again just angled it in the short third man. There are two fielders, Mukhtar Qadri, and there is a fielder in the deep, Vishal, to stop those angles from Sunny Kanekar. Suprat Gaonkar from the far end in the fourth over. Swing and a miss, very quick delivery, beaten on the pace, well bowled by Suprat Gaonkar. Score remains 41 without the damage of the wicket. And 161 is what Dharasakal Stars are chasing to win this match. Left the ball and umpire says over. Completion of 4 overs going at the rate of almost 10 runs now. 41 without a loss. Captain Qadri once again he is back on the bowling proceedings to begin the 5th over. Score is 41 without a loss. Lovely shot. This one is definitely been connected so well
And this is the one that somewhere in the stands. Very first delivery from Mukhtiar Qadri, and Azan Muhammad has picked it up beautifully. Could be a catch here and taken. The much needed breakthrough here for the captain. After that, outstanding 6. And the partnership has finally been broken, and that will be a sign of relief for the captain as well as the team, Maharudra Rising Stars, as the dangerous Azan Muhammad is dismissed. And what a wicket here for Maharudra Rising Stars, and the captain has provided that. Once again, the very first ball he has dispatched that out of the park, somewhere in the stands, and then he wanted to just play a drive, but it was slightly up pitch, but he played straight for the covers fielder. And what a fantastic catch from Omkar Gowde, not making a mistake in grabbing that opportunity. And after first wicket, slightly now the momentum will be affected of Dharasakal Stars, because their star batsman Azan Muhammad is out. Prasad joins in at number 3, that is one down batsman. On the front, yes, he gets off the mark with this single. Prasad. But now the fall of the one wicket of Azan Muhammad, Sunny Kanikar will have to take the responsibility of batting, and that is how it goes. The two ways batting, and they had given a flying start to the team, Dharasakal Stars, and now after the wicket of Azan Muhammad, now Sunny Kanikar has to take the lead alongside Prasad, and Prasad has to support him to form a partnership. But what is going on in the mind of the captain is unpredictable, and he's bubbling with confidence. Well, wonderful over this has been brilliant so far after that first delivery. Oh, the ball is up, and almost the heart was in the mouth of all the players of Dharasakal Stars. A wonderful comeback from Captain Qadri, and that to Sunny Kanikar, who's well settled batsman. Dharasakal Stars are not effort to lose him at this moment of time.
Look at that, what a wonderful autocurve to bring to an end the 5 overs. Just gave 8 runs and picked up a beautiful and a much needed wicket for Maharudra Rising Stars. The prize wicket, I would say, of Azan Mohammed. After the completion of 5 overs, 49 runs for the loss of 1 wicket. Basavraj Madar, once again a quick change, the bowling from the other end now. Mukhtar Qadir is realizing that the ball is, which is not effective from this side, he quickly brings him from the other side. That is a good thinking and good changeover from the captain. Wonderful drive. 50 up for Dharasakal. With this couple of runs, 51 in fact. 51 and more 110 runs now needed for them to get to the target of 161 to win. As Sunny Kanekar is looking solid with a good performance in batting in this tournament. Lofted shot, the ball is up and will go for 2 runs easily. I think he has done well to stop the ball within the circle. A little bit of coco is what we saw at that point of time. It's 2 runs to take the score to 53. It's every delivery now. Sunny Kanekar is going for a couple of runs. This was a lofted shot, realizing this is the last over of the power play. He can take some chances. On the back foot, wanted to just slice it, but the ball has gone very quickly towards the wicket keeper. A slightly bit of an extra bounce there from Basu Madar. Oh, taken it aerial and out of the park. That's gone huge, high and handsome. That shot has made Basu Madar scratch his head. It's a 6 runs, beautifully picked up. It is definitely turning out to be a great battle between these 2 talented teams and the high-performing team of the tournament. And Sunny Kanekar is applying himself quite effectively in this match. Angled it beautifully, sensible. He's not going every ball a big, huge sixer. But look at the sensibility, maturity, and the sense of responsibility is what Sunny Kanekar is showing. End of 6 overs of the power play. 60 runs going at the rate of 10 for the loss of 1 wicket.
As you can see, the fielding position in the offside for Sunny Kanekar. There's a deep third man, gully point, deep covers, extra cover as well as deep long off. A lot of fielders in the offside. And on the onside, long on and short fine leg in the deep mid-wicket region. So all the fielding position for Sunny Kanekar. In the meantime, Suprat Gaonkar has been now once again been brought into the bowling proceedings from this end, that is the commentary box end or the pavilion end. So this kind of change was frequent from Captain Kadri, which makes him very smart captain. Oh, lovely delivery. Good line delivery. The ball, a slightly rising delivery that was from Suprat. Just quickly taken his bat off Prasad, who's in at number 3. That is after the dismissal of Azan Mohammed. And Azan contributing 25 runs in 15 deliveries. The left-hand batting sensation. Shot of length, played in the covers for a single, quite comfortable, straight to Amber Naik. A slight bit of a fumble there has allowed them a very single run, comfortable for Prasad. Good example of control, aggression in the T20 format of the game by these two, once again trying to just form a partnership. On the back foot, just a nudge. Wait, they're looking for 2 here. Could be very interesting. Oh, easy. Could be 3. No ways. Wonderful running. Just a nudge and intentionally done that beautifully by Sunny Kanekar. A control shot from him. He knows exactly how much bat to be applied. Not very far now to shot right in between Subrat and Basumadar. That is a smart cricket from Sunny Kanekar. Lofted shot once again. He gets hold of this when the ball could be. Oh, the ball has dodged the field. One bounce to the fence. And the fielder almost to reach the ball. The ball has gone on the backward after taking a drop on the ground. So, however, a boundary was written on this delivery for Sunny Kanekar. He is enjoying his batting and so are the audience. Nicely done once again. Look at that sensible batting performance from Sunny Kanekar. Sensible Sunny is doing the job. Completion of 7 overs, 68 for 1. And once again, a very good afternoon to all the listeners. You're listening to Nadeem Ahmed in English. And how is your day today? And I would like to wish all the listeners, may you all have a very wonderful day today. Cricket without commentary is like a stylish batsman without runs, a fast bowler without wicket, and a wicket keeper without catches. And you're watching one of the most reputed tournament on the Goan soil, Royal T20 Championship 2022 Season 6, organized beautifully by Veling cricketers. And all credit goes to Pritesh Naik and his team for great efforts. Beginning of the 8th over, it's Amber Naik from the far end. 68 for 1 is the score. Swing and a miss. Want to take the ball on the half lane play. Once again swing. He's annoyed by himself. There wasn't a footwork involved, because always whenever there is a footwork and the batsman trying to reach to the ball and then trying to take the ball on the half lane play, that is exactly how he can time the ball sweetly.
Oh, this time the bottom edge of the bat takes the ball straight to Mukhtiar Qadri, who's been deployed in the short third man region. In the deep is Vishal Gowde with 11 number jersey. And the jerseys are looking very attractive on these players. It looks like an IPL matches which is going on at Madgai ground. Oh, rising delivery, well bowled by Amber Naik. Just keep Sunny Kanekar guessing how to play these rising deliveries. It's a sneaky setup out there, as you can see. Once again, a lot of fielders been positioned in the offside. There is a short third man, deep third man. There is a gully. There is a deep point. There is covers. There is long off. Coming down the track on the front foot this time. Prasad, but a little bit of bat on that, and the ball has gone to the square leg region for a single. Picking up singles and just keeping the momentum going is what is the choice of the batters, and been doing so well so far. And the score with the help of this single has gone up to 69 runs. Slow one, well bowled. Change of pace in English, Gati Parivartan in Hindi, Gati Badal in Marathi, Gati Badlavan in Kannada, in Gujarati, Gatiman Fairfar in Urdu, Raftar ki Tabdili, Yoga Mattam in Malayalam. That kind of delivery from Amber Naik. And what do you say in Malwani if Badal Chaudhary has to be here? He would have said, Run line Tobar and wall line Watibar. That would have been his words for the change of pace. However, end of 8 overs, 70 runs for the loss of 1 wicket. To begin the 9th, it's once again Suprat Gaonkar, who won the Royal Enfield Bullet as the man of the series in CM Trophy. That is his caliber, and what class, what performer that is. You can only imagine with that great man of the series in the CM Trophy. He's won Royal Enfield Bullet. Wonderful delivery. The very first delivery, just keeping the batters thinking how to play. Good length. And good length is one delivery which will force the batsman to think whether to play on the front foot or on the back foot. But by the time he realizes, he comes to a conclusion, the delivery will go past him to the wicket-keeper's gloves. Nicely worked and played straight to long on region this time. And of Sunny Kanekar, the foot movement, especially in this inning, has been very impressive and can be appreciated by anyone who watches him. Coming down the track on the lower full toss, been hit quickly by Prasad, but didn't quite get hold of that one. But still will get a single here. That timing he just missed out on. But a good footwork, quickly surprising Subrat Gaonkar. Oh, no footwork, just wanted to take the ball, stand and deliver kind of a shot, premeditated shot from Sunny Kanekar. Very dangerously he played. Is what we can see in him is very skillful batter, and only batsman who's timing the ball quite nicely, quite sweetly, quite purely.
Oh, this time on the half volley. This is good bowling from Suprat Gaonkar, keeping both the batters thinking. Such a wonderful line and length, a little bit of a optimum amount of pace as well, mixing it up beautifully, trying to bring in control after a lot of runs. Oh, the ball is up this time. Will the fielder get to it? No one will get to it. The ball once again after one bounce has raced over to the boundary, right in between long off and long on. Both had ran Vishal and Basomadar, but both were unsuccessful. The last ball boundary brings the score to 76 after the completion of 9 overs. It's 76 for 1. तो 9 ओवर की समाप्ति और 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी जो कि देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत निश्चित तौर पर देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों में, यानी कि अजान मोहम्मद और सनी कानेकर ने जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी टीम को, दारसकल स्टार को, बिल्कुल उसी प्रकार की अच्छी शुरुआत दी है। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार लॉन्ग ऑन की और ढकेला गेंद को 1 रन के लिए प्रसाद। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को नदीम अहमद की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। ये 10वीं ओवर जो कि प्रगति पर और अंबर नाइक दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में संभल कर खेला, बिल्कुल बैकफुट पर हल्के हाथों से 1 रन के लिए कवच की दिशा में। बढ़िया फॉलो थ्रू अंबर नाइक की ओर से 1 रन का इजाफा फिर से एक बार और स्कोर को पहुंचाया 78 रनों पर। मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में ऑफिशियल स्कोर साइश, मेरे पास समय है उनका भी स्वागत करने के लिए, और मेरे साथ यूट्यूब के निखिल भी जो कि जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत। बैकफुट पर फिर से एक बार ड्राइव, इस बार 2 रन की कोशिश होगी और आसानी के साथ 2 रन पूरे करेंगे बल्लेबाज। जिसे गेंद निकली शॉट कवच की दिशा की ओर से, बिल्कुल उस पर लिखा था 2 रन, और दौड़कर देखिए कोई हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल काफ़ी आराम से बल्लेबाजी होती हुई इन दोनों के बीच, यानी कि फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलती हुई। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार हाफ वॉली पर, गेंद को भेजा डीप पॉइंट की ओर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, यानी कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात। केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी बल्लेबाजों को। आप देख सकते हैं हल्के से बादल छितराए हुए आसमान पर, यानी कि शायद आज शाम में हल्की सी बारिश की संभावना। पड़की हुई गेंद फिर से एक बार हल्की सी दिशा दी, बल्ले को मोड़कर सनी कानेकर ने काफ़ी सारे शॉट्स इस प्रकार से खेले हैं और हर एक शॉट पर कम से कम 1 रन तो ज़रूर बनाया है। बिल्कुल पूरे लय में बल्लेबाजी करते हुए सनी कानेकर, और सनी कानेकर के बारे में बताना चाहूँगा कि बिल्कुल इस टूर्नामेंट में काफ़ी उभर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे देर तक क्रीज पर टिके रहते हैं, तो उसी की वजह से 4 पॉइंट की लीड के साथ टॉप पोजीशन पर है दारसकल स्टार्स। हाफ वॉली पर हल्के हाथों से कैच का मौका, इस बार
लॉन्ग ऑफ की ओर, बिल्कुल दो माइंड में खेला था प्रसाद ने, मारूं या फिर हल्के हाथों से खेलूं, बिल्कुल समझ नहीं पाए, उछाल कर खेला और एक आसान सा मौका दिया खिलाड़ी को कि आसान से कैच ले ले। उसके साथ क्या ही सुंदर साझेदारी निश्चित तौर पर बनी थी, पूरी तरह से संभले थे दोनों ही बल्लेबाज, मगर इस विकेट के साथ फिर से एक बार हल्की सी कमबैक करती हुई टीम महारुद्रा राइजिंग स्टार्स, यानी कि प्रसाद आउट। रजत हल्डनकर एडी ने सुंदर कैच के साथ, ओ शायद अपनी उंगली को पर चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता की आवश्यकता, नीचे ही फर्स्ट एड बॉक्स है, पेशेंट बाहर और फर्स्ट एड बॉक्स अंदर। बिल्कुल शायद उंगली पर आ लगी है एडी की। दस ओवरों की समाप्ति, 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11वीं ओवर लेकर फिर से एक बार सुब्रत गांवकर गेंदबाजी के क्रम में। ये छठा दिन रॉयल T20 चैंपियनशिप का और ये मैच जो कि 11वां। फिर से एक बार बड़ा शॉट, सुनिए आवाज, 6 रन के लिए बिल्कुल कॉमेडी बॉक्स के छत पर आ गिरी है। तो सनी कारेगा ने बिल्कुल फिर से एक बार सुंदर शॉट के साथ आगाज किया है, यानी कि वेलकम कहा है सुब्रत गांवकर को। बिल्कुल रूफ टॉप पर कमेंटेटर यूट्यूबर बिल्कुल छुपते नजर आए। इस प्रकार का प्रहार था बिल्कुल। तो बिल्कुल गेंद ढूंढते रह जाओगे, सभी ढूंढ रहे हैं मगर गेंद मिलने का नाम नहीं ले रही। तो इस प्रकार का बिल्कुल एक करारा शॉट सनी कानेकर के बल्ले से निकलता हुआ लाजवाब सिक्सर। इस 6 रन के साथ सनी कानेकर अपनी निजी स्कोर कुछ ही समय में आपके सामने उनका निजी स्कोर भी बताया जाएगा, यानी कि गेंद मिल चुकी है आखिरकार और फिर से एक बार मैच की शुरुआत होगी। 46 पर अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि 46 पर सनी कानेकर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सनी कानेकर अपना अर्धशतक पूरा करें, पिछली दफा रह गए थे।
इस बार बिल्कुल अपनी मम्मी पापा को कह सकते हैं कि मैंने हाफ सेंचुरी लगाई है। (46 रन अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सनी कानेकर, बिल्कुल लाजवाब शॉट, 40 पे थे, लंबा शॉट लगाया कमेटी बॉक्स के सीधे छत पर। संभलकर बैकफुट पर पॉइंट की ओर खेला, 1 रन के लिए अपना स्कोर 47 पर पहुंचाते हुए सनी कानेकर केवल 3 रन दूर अपने अर्धशतकीय के पारी से। और चौथे नंबर पर जो कि बल्लेबाज उतरे हैं लंबे ऊंचे कद के बिल्कुल एक योद्धा खिलाड़ी सोमेश प्रभु देसाई, उनके कजिन भाई सुयश प्रभु देसाई बिल्कुल गोवा की शान में इजाफा करते हुए आईपीएल के खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खेलते हैं। ओह, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद विकेट कीपर के पास। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी बल्लेबाज उस प्रकार का शॉट लगाने की कोशिश करता है और ख़ास तौर पर जब गेंद लगती है बल्ले के अंदरूनी हिस्से में तो एंगल के साथ स्टंप पर आ जाती है। फिलहाल सोमेश भाग्यशाली रहे, नए बल्लेबाज थोड़ा वक्त लेंगे। संभलकर बैकफुट पर 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए सोमेश प्रभु देसाई, और ये ओवर से और 1 रन का इजाफा हो सकता है, यानी कि 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए सोमेश प्रभु देसाई ने स्कोर को पहुंचाया 91 रनों पर। यह 11वीं ओवर जो कि प्रगति पर जो कि जारी है, स्कोर हुआ है 91, 2 विकेट के नुकसान पर। और सनी कानेकर अपने निजी स्कोर 47 पर बल्लेबाजी करते हुए। और संभलकर बिल्कुल बढ़िया संभलकर खेला और इस डॉट गेंद के साथ 11 ओवर की समाप्ति 91, 2 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए चलते चलते एक शेर आपके सामने, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो लोग आपको असफल देखना चाहते हैं। सुंदर ड्राइव पूरे बल्ले के साथ कवच की दिशा में 1 रन के लिए स्कोर को पहुंचाया 52 रनों पर। 12वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। फिर से एक बार अंबर नाइक को लाया गया है गेंदबाजी कर में दूर वाली छोर से। आप देख सकते हैं लुका छुपी का खेल खेलता हुआ सूरज अभी भी बादलों के पीछे छुपा हुआ। गेंदबाजी के क्रम में विश्लेष, माफी चाहूंगा, हल्का सा रूम वहां पर। फिर से एक बार 1 रन के लिए सौम्या ने खेला है कवच की दिशा में। फिर से एक बार आप फील्डिंग पोजीशन देख सकते हैं।
फिलहाल हल्की सी गली में तब्दीली की गई है कादरी द्वारा, यानी कि डीप थर्ड मैन को लाया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन गली में स्वयं कप्तान कादरी, डीप स्वीपर कवर में खिलाड़ी। एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर की ओर गई जहां पर सुब्रत गांवकर तैनात है और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। अब देख सकते हैं ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट और वहां पर स्क्वायर लेग को दायरे के अंदर लाया गया है, इस प्रकार की फील्डिंग पोजीशन। और इस गेंद पर बिल्कुल डीप थर्ड मैन विशाल को रखा गया है। बड़ा शॉट, गेंद हवा में, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, बैनर से जा टकराई है गेंद। बिल्कुल एक चौका जो कि खूबसूरत निकलता हुआ, मगर आखिरकार काफी देर बाद ही सही, मगर एक सुंदर चौका देखने को मिला कवच की दिशा में। सौम्या प्रभु देसाई के बल्ले से निकलता हुआ शानदार टाइमिंग से भरपूर शॉट 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 98 पर पहुंचा, केवल 2 रन दूर 100 रनों से टीम धारसकाल स्टार्स। बिल्कुल एंगल दिया है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। सुंदर बल्लेबाजी, और सौम्या प्रभु देसाई जाने जाते हैं एक योद्धा खिलाड़ी के रूप में, और उनका हर मैच में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गेंदबाजी के क्रम में कैचेस, खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हैं, खुद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल धारसकाल स्टार्स में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। संभल कर फिर एक बार 50 रन पूरे होते हुए सनी कानेकर के कांग्रेचुलेशन सनी फॉर योर स्वाश बकलिंग इनिंग ऑफ 50 रन्स। बिल्कुल एक दर्शनीय पारी खेली है, और टीम के 100 रन भी पूरे होते हुए और उनके 50 रन भी। ये देखिए, एक तीर से 2 निशान, 1 रन से 2 उपलब्धियां। एक 50 रन अपने पूरे किए और दूसरे टीम को पहुंचाया 100 रनों पर। 12 ओवर की समाप्ति, 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तब्दीली ओवर में और तब्दीली कमेंट्री बॉक्स में भी रहेगी। आमंत्रित करना चाहूंगा मेरी सहयोगी कमेंटेटर चंदन सिंह से, सुनिएगा आगे के अपडेट्स। इसी बीच अंपायर ने कहा दैट्स दी ओवर। पावेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं कादरी, और गेंद को दिशा दे दिया। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। इसी बीच एक और रन जुड़ता हुआ, तो बढ़िया मुकाबला, हम किसी से कम नहीं। तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे अभी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, सोमेश और सनी के बीच। सनी ने शानदार यहाँ पे अभी अर्धशतक लगाया और नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। कादरी अपने ओवर की अगली गेंद, और उतना ही सुंदर शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर स्ट्रोक सोमेश के द्वारा, गेंद कवर्स के बगल से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो उपयोगी चौका
स्कोर उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ता हुआ। अभी तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी धरसकाल स्टार्स के बल्लेबाजों द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से गेंद को खेला थर्ड मैन की तरफ। फील्डर मौजूद हैं और एक और यहाँ पे रन खाते में जुड़ता हुआ। पवेलियन एंड से चले कादरी और गली के क्षेत्र में खेला। हालांकि फील्डर तेजी के साथ पकड़ के थ्रो करना चाहते थे और थोड़ी सी मिस फील्ड, और जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आते गेंद को उठा के थ्रो करते तो दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ यहाँ पे 2 रन पूरा करते हुए तो थोड़ा सा वहाँ पे मिसफील्ड, और उस मिसफील्ड का भरपूर फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरत मौसम। इसी बीच कादरी चले, आगे बढ़ के जगह बनाया और गेंद को खेल दिया। हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन के बगल से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और बहुत ही सुंदर शॉट गेंद दे के जाएगी 4 रन। और शनि जो कि और अब की बार हालांकि अपील और आउट, तो दूसरा झटका लगता हुआ और ओवर समाप्त। 13 ओवर समाप्त, 112 रन 3 विकेट खोने के बाद। तो अभी अभी आउट होकर पवेलियन लौटे हैं बल्लेबाज शनि, जिन्होंने 41 गेंद पर 57 रन की बहुत ही उपयोगी पारी खेला था धरसकाल स्टार्स के लिए।
यतीन चले, सामने बल्लेबाज सोमेश के लिए, और धीरे से गेंद को टहला दिया। गेंद जा रही है और जब तक वहाँ फील्डर गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, ऑन साइड में गेंद को खेला था। इसी बीच बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। तो क्रिकेट सुंदर यहाँ पे देखने को मिलता हुआ और बहुत ही खूबसूरत मौसम। फील्ड की अगर हम बात करें तो हरी हरी घास और आउटफील्ड बहुत ही तेज। हम किसी से कम नहीं, तो मैच बिल्कुल कौन जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। देखना है कौन सी टीम विजयी होगी। इसी बीच और फिर से धीरे से पुश किया और यहां पे रन लेना चाहते थे, हालांकि बहुत ही सुंदर थ्रो। हालांकि बल्लेबाज समय रहते क्रीज में सुरक्षित, अन्यथा एक यहां पे खतरा हो सकता था। और सोमेश जो कि समझाते हुए कि आराम से जल्दबाजी ना करें और समय रहते वहां पे बल्लेबाज देवदत्त जो कि क्रीज में सुरक्षित हो गए थे। यतीन सोमेश के लिए और जगह बना के खेला, सीधे वहां खड़े फील्डर के हाथ में। तो बहुत बड़ा झटका, धड़सकाल को लगने वाला चौथा झटका और सोमेश आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। धड़सकाल स्टार्स को लगने वाला चौथा झटका, आउट होने वाले बल्लेबाज सोमेश और अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज चेतन। अब चेतन और देवदत्त के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, और देखना है इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करते हैं दोनों बल्लेबाज। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा, यतीन के द्वारा, और गेंदबाज चले सामने बल्लेबाज के लिए, जगह बनाया और गेंद को खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक ही रन मिलेगा। मुकाबला दिलचस्प और रोमांच भरा हुआ। जैसे जैसे गेम आगे जाएगा वैसे ही रोमांच भी यहाँ पे चरम पे देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज के लिए, और हालांकि धीरे से गेंद को खेला था। विकेट कीपर ने गेंद को खुद फील्ड किया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे विकेट कीपर चौकन्ने और उनके इरादों को देख करके बल्लेबाज ने अपना इरादा बदला। अगली गेंद लेकर धीरे से खेला, फील्डर मौजूद हैं। शॉर्ट कवर पे कोई रन नहीं, ओवर समाप्त।
14 ओवर समाप्त और 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर धड़सकाल। चौदह ओवर समाप्त। तो यहाँ से 6 ओवर का खेल और बाकी 36 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए जीतने के लिए 36 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। तो हालांकि यहाँ से सफर थोड़ा सा कठिन पर नामुमकिन नहीं। समझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही खूबसूरत मौसम, आसमान में बिल्कुल काले बादल छाए हुए और ठंडी ठंडी मन को मुग्ध कर देने वाली शीतल वायु चलती हुई और काफ़ी दूर दूर से समर्थक इस मैच का आनंद लेते हुए पावेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज बशु और बल्लेबाज के लिए हालांकि हाथ खोलने का मौका और गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री के पास और फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच 1 रन यहाँ पे और टीम के खाते में, बल्लेबाज के खाते में जुड़ता हुआ। तो देखना है जीत का सेहरा किस टीम के सर पे बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बल्लेबाज अब फील्ड का मुआयना करते हुए स्ट्राइक पे हैं देवदत्त। गली पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर। इसी बीच बढ़िया अच्छी गेंद, धीरे से गेंद को खेला सुरक्षात्मक तरीके से और स्कोर में कोई इजाफा नहीं। इसी बीच गेंदबाज बशु अब की बार आप स्टंप के बाहर और निश्चित रूप से एक दिशाहीन गेंद, एक और यहां पे रन उपहार स्वरूप जुड़ता हुआ और 17 रन, बहुत ही बढ़िया गेंद और खुद गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। स्कोर 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर धड़सकाल। इसी बीच और गेंद को टहला दिया, गली के क्षेत्र में 1 ही रन मिलता हुआ। तो अब मुकाबला धीरे धीरे दिलचस्प होता होगा। दिल की धड़कनें यहां पे समर्थकों के थोड़ी सी तेज होती हुई और देखना है अंत में बाजी कौन सी टीम मारती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस मैच का YouTube पे प्रसारण सीधा होता हुआ और इसी बीच सामने बल्लेबाज के लिए और ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इशारा। तो एक और यहाँ पे रन मिलता हुआ। तो इस ओवर में अभी 2 दिशाहीन गेंदें वाइट के रूप में की जा चुकी हैं बसु के द्वारा। इसी बीच अब की बार हालांकि जगह बनाया बल्लेबाज ने और गेंद को खेल दिया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
तो बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का यहां पे बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ, बल्लेबाज चेतन के बल्ले से निकलता हुआ। बीएसएनएल सिक्सर। इसी बीच अब की बार छोर चेंज किया और गेंद कोण बदलती हुई, चकमा देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर समाप्त। 15 ओवर समाप्त। स्कोर जा पहुंचा 125 रन 4 विकेट खोने के बाद धरसकाल स्टार्स। और दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे यतीन। और सामने बल्लेबाज तैयार। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद गई ऑन साइड में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। और हालांकि थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां खड़े फील्डर के द्वारा आता हुआ और बहुत ही पिछले ओवर में बहुत ही करारा छक्का लगाया था बल्लेबाज चेतन ने। गेंद आग लगा दी करती हुई निकल गई थी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही लंबा छक्का और पावरफुल छक्का बल्लेबाज यतीन के द्वारा। तो अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन धरसकाल स्टार्स के बल्लेबाजों द्वारा और अपने बॉलिंग रनअप पे तैयार हैं गेंदबाज यतीन। सामने बल्लेबाज भी तैयार हैं देवदत्त समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और अब सामने तैयार और एक बार फिर से बहुत ही हालांकि धीरे से गेंद को टहला दिया था सीधे फील्डर के हाथों में। शॉर्ट कवर पे जो फील्डर हैं उनके हाथों में गेंद निकल गई थी और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल फाइन लेग के बगल से गेंद निकली और बाउंड्री लाइन के फील्डर आए, गेंद को उठाए और थ्रो किया। इसी बीच 2 रन पूरा होता हुआ तो बल्लेबाज बिल्कुल जीत की तरफ अग्रसर होते हुए और मंजिल नजर आती हुई। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अब की बार शॉर्ट पॉइंट कवर के क्षेत्र में खेला। एक और यहां पे रन। जैसे ही बल्लेबाज शॉट लगाते हैं और तुरंत निकल पड़ते हैं रन के लिए और रन यहां पे पूरा भी करते हैं। तो बहुत ही समझबूझ के साथ बल्लेबाजी और मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। कादरी जो कि फील्ड को जमाते हुए इसी के साथ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और फिर से खेला। गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक और यहां पे आसानी से रन निकलता हुआ। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। जीतने के लिए 20 ओवर में 161 रनों की जरूरत, उसके जवाब में धरसकाल स्टार्स ने बहुत ही
सोची समझी शुरुआत और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, गेंद हवा में है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। पॉइंट के बगल से निकल गई थी गेंद और दे के जाएगी 4 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त। 16 ओवर समाप्त, स्कोर 135 रन। 4 विकेट खोने के बाद और आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में सुनाएंगे नदीम अहमद। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद चंदन। 135 is the score after the completion of 16 overs. 24 balls, 26 runs is the equation. Almost runnable situation here for the team Dharasakal Stars. Kadri once again on the bowling track. Lovely delivery, but beautifully played on the back foot. Chetan Parab is also showing some good sign of batting. One big lofted shot for Basavaraj Madar was just eye-catching. Wonderful striking that was on the half volley by Chetan Parab. And Devdat Chodankar. So once again a good combination of batters here on the crease is left hand right hand combination, which is working wonders for team Dharasakal Stars. 23 balls and 25 runs is the equation to win for Dharasakal Stars. Almost run a ball. Good drive in the covers, could be a couple of runs here. They're looking for 2. Just settling down for a single. But what a glorious cover drive that was from Devdat Chodankar. But finds the field at the deep sweeper cover. There is Ambar Naik is being deployed in that particular area to stop those cover drives by the batters, especially by the right-handed batsman, that is Devdat Chodankar. And once again, as you can see, a slight bit of a change in the fielding as the left-hander Chetan comes on strike. A round wicket from captain Mukhtar Kadri. Fuller on, the ball is up and it will go all the way. 6 runs. What a beautiful striking there is. Once again, the ball is coming right out from the middle of the bat from Chetan Parab. Though there was Basavaraj Madar, the tallest of them all of MAHARUDRA Rising Stars. His jump also could not reach to the ball. It was so fiercely struck by Chetan Parab for maximum runs in the long off. Nicely done. Just chipped in. Oh, which side the throw is, when the throw should have been at bowler's end. Almost Devdat Chodankar run half the crease and quickly made a comeback after realizing there isn't any runs. It's stranded right in the middle of the crease. Which way to run? He's run back home. Bowler's end safe.
143 is the score. Just 18 runs away. Dharasakal Stars will make it 6 points today. Good striking, but this time right in the middle of the two fielders. Right in the cow's corner, where there is no cow grazing, and the ball races away. Mukhtar Qadri is turning out to be very expensive in this over, in spite of a good mixture from his deliveries. But look at the beautiful timed shot from Chetan Parab. He's reading his length quite well. .147 with the help of this boundary in the cow's corner from Chetan Parab. On the back foot, just wanted to slice it in the depth of the crease. A dot ball to sum up the over, number 17. 17 was gone by. It's 147 for the loss of 4. Basavaraj Madar to start with the 18th over. Score is 147. Breaking this partnership very essential and important for the bowlers of MAHARUDRA Rising Stars. A slight change in the fielding from Captain Qadri. Slice it. The ball has gone past the fielder. That will be a boundary. It's 150 up with this boundary. In fact, 151. For Dharasakal Stars reaching on 151. Beautifully sliced. And look at the judgment, right? Measured slice that was from DHADSAKHAL. As if he has calculated that in the mind. And look at the placement right in between. Two gullies. Waiting is the call straight to Qadri. 151, just 10 runs away for victory. Dharasakal Stars, and every match there is 3 rewards to be given. In the meantime, a lofted shot but calculated. Not very far, not too short, right in the middle. In between bowler and the deep long off field for another single, adding up to the total to take the score tally to 152 runs. I was just mentioning that every match, as is the beautiful ritual and the tradition of this Royal T20, 3 rewards to be given after the match. It's not 1 and 2, it's 3 rewards. Oh, this time straight to the fielder. Dropping catches at this point of time is like giving the match away. Take it. This match is a gift to you, Dharasakal Stars. Tough time for MAHARUDRA Rising Stars. On the back foot, just played with the gentle hands. Nothing much the bowlers and the fielders can do about it in spite of the opportunity there for this over from Basavaraj Madar, but the catch was been put down. I think Yatin Naik it was. However, completion of 18. 154 for 4 wickets down.
12 balls, 7 runs is the equation. The match is getting over on time. It's all credit to the officials, especially Punya Palkar and Damodar Naik. Damodar Naik is always hot favorite of CPL. Now it is going to be a season 11, I guess. The most famous umpires, Babu Naik and Damodar Naik of CPL. They've been doing a wonderful job right from many years. I think almost from season one. Damu, are you been associated with CPL? You can confirm by raising your hand. Half volley on the long on. 155. One big hit in 11 deliveries is the game over of this match. But they will just like to play their natural, picking up singles in twos. 11 balls and now 6 runs needed. The score is 155. No matter where the fielding has been set by the captain, the batter has one thing in mind: to play singles. Take that. How beautifully done by Chetan Parab. 156. Just 5 runs away. 161 is the target. What a great run chase. The reason was the good open wicket partnership between Azan Mohammed and Sunny Kanikar. And Sunny Kanikar contributing 57 runs, whereas Azan contributing 25 in just 15 was a handful of runs. Drive here could be 2. Yes, they're going for it. Two runs to take the score to 158 runs. Win-win situation here for Dharasakal Stars. Just 3 runs and soon it will be the post-match presentation before the lunch break. A lofted shot, I think that will be a catch. Yes, it is, but taken by Subrat Gaonkar. MAHARUDRA Rising Stars have picked up a wicket at this juncture of time, and they're just not giving up. There's more 3 runs needed. It's Devdutt Chodankar is out with playing that lofted shot to finish, I believe. But the shot resulted in his curtains down, the finish of his innings. Not of the match though. Today one thing is certain, and Somesh is going to throw a party for Dharasakal Stars. But what a good team making a mark in this tournament is Dharasakal Stars. But one thing is certain, it's a team of Mukhtiar Kadri and team of MAHARUDRA Rising Stars, which is capable of making a comeback at any given time. If they can just pull up their socks, they're going to be the most dangerous team of the tournament, that is MAHARUDRA Rising Stars. It is not yet over though, as this is the league matches, and the defending champions can make a roaring comeback under the captainship of a skillful, very talented, very smart, very intelligent captain, Mukhtiar Kadri. The team will be not left behind. That one thing certainly I can inform the audience. That's the winning shot, and congratulations to Dharasakal Stars for a hands down victory. Congratulations to them, and tough luck, MAHARUDRA Rising Stars.
And officials, you all did a wonderful job as well. So that's all from the commentary box for this match for now. Please do join me for the post-match presentation. Let us find out who is the man of the match, who is the dynamic player of the match, and who is the maximum sixes award goes to which particular player. Test, mic testing. Test. Once again, I would like to say congratulations to Dharasakal Stars and tough luck for Mukhtar Qadri and his team. Can I have Captain Qadri for a while? Mukhtar, can I have you here? Mukhtar, today the team looked good, but good balance in the team as well, and good score 160-161 in T20 is not a less score to defend, but still things were not working in your ways. The good partnership between Azan Mohammed and Sunny Kanikar took the game little away from you. First of all, thanks for the Dharasakal to winning this match because they have played very well. Because in they having a 9 player and they played very well. Because season without 11 you cannot play it. They played very well. They have proved themselves. They are good teams. No doubt. Because 160 was a good score on this ground. Because of fielding, we has lost this match. Because whenever the ball was coming to us, our player ill-experienced ball, they are going for the chasing for the ball. They are giving double runs over there. From that time, the score started for them. However, last match is a deciding for us with Nageshi. If we win, we are inside. If we out, we out. That is exactly the area where MAHARUDRA Rising Star has to just improvise and come back as a good team. Otherwise, it will be like, as you rightly said, it could be in and out of for your fortune. Yeah, of course. That match will be a semi-final for us, with Nageshi, because they're having a last match, we're having a third match. But we have to win to be in semi-final, because this team already has qualified for the semi-final. Let's hope for the best. That new match.
As you are being one of the smart captain, things will definitely come your way. I'm definitely certain, and all the best for you in the future matches. Thank you very much. Mukhtar Kadri, and now for the, I would like to request Damodar Naik, official umpire, to please come on the stage. First, we'll start with the dynamic player of the match. The dynamic player of the match goes to Yatin Naik. Yatin, can I have you here for your wonderful contribution of runs, 69 runs. That was absolutely swashbuckling inning. We took the team to 160 and 161 was the target. We'll be receiving his gift voucher from Damodar Naik. Yes. And now I would like to call the maximum sixes award goes to none other than the wicketkeeper batsman. It's Sunny Kanekar. Maximum sixes and a good contribution of runs as well. Sunny, the huge sixes, one right on the top of the commentary box was threatening. Sunny Kanekar receiving a maximum sixes award from Damodar Naik, official umpire. Well done. And Sunny, congratulations, and you're in a very good and sublime form in this tournament, enjoying your batting, and so are the audience. Yes, ball is coming right to the bat, so I just play my shots. And Sunny, what I have seen in your batting is now a lot of maturity, a lot of sense of responsibility is what you are showing on the ground. What is this turnaround in your batting performance? Has there been any counseling, or are you practicing it more, or the exposure of the matches is made you to play in this manner? See, I'm outstation player here, so the responsibility is rising. So I have to play till the end. So just I play till the end. You're definitely playing well, and all the best for you in the future matches, Sunny. Thank you. And now, man of the match. Any guesses? 5 wickets and 25 runs contribution in just 15 deliveries. The stylish left-hand batting sensation is Azan Mohammed. Please come and take your reward. The man of the match for this match. अजान बिल्कुल ईद का तोहफा देने जा रहे हैं आप धारसकाल स्टार्स को, जिस प्रकार से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो परसों दिन की शेरखुमा बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार की आप फॉर्म, हालांकि आज जिस प्रकार से सभी ने उम्मीद की थी कि अजान मोहम्मद के बल्ले से फिर से एक बार अर्धशतकी की पारी निकलेगी, मगर वहाँ पर आप रह गए, तो कैसा शॉट सिलेक्शन था, उसके बारे में बताइए। बस पिछली गेंद में मैंने छक्का मारा था, आई वेंट टू हिट अ 6, सो आई थॉट आई वुड गो फॉर द सेम शॉट, बट देन माय बैट टर्न इन द हैंड, सो couldn't make it there. Then you think this tournament, Dharasakal Stars are on the top position now with the 6 point, of course, as a team to be the champions? Yes, of course, we have great players, and with 9 players we have won this game, so with 11 we can do much better. So yeah. You're sounding confidence, and please carry this confidence in the next level as well. All the best for you, Azan. Keep enjoying and keep entertaining the crowd. That's all from the presentation. Thank you.